saya Okay. Hello everyone. I guess लोग आ रहे हैं. चलो ठीक है. No problem. We'll start.
Okay. So now, yesterday we saw about yesterday and day before yesterday, we have taken into the first order, the linear and non-linear also. Today, we'll start and we'll move into, you can say, higher order, second order, and higher order also. That will be also again, we'll be dealing in linear only, but it will be homogeneous and non-homogeneous both. Fine. Okay. So the idea of the linear equation is clear, although अभी तक हम लोग देख चुके हैं. So just going through it only. हमने देखा था कि yn and then all the coefficients of y nth derivative, like this is n order, n minus 1 order, and this is first order, this is just y, so no, like 0 order and all. And there is a function of x on the right side, like that. So where this p1, p2 and all that are also function of x, and x itself is also function of x. So this was our linear differential equation of order n, like the highest order was n. And all the derivatives here are having a degree of 1 only. ठीक है, किसी को भी स्क्वायर या क्यूब नहीं किया गया या फिर रैशनल या रेडिकल जैसा भी कुछ नहीं. And also we saw that if the right hand side function, that is x, becomes 0, this differential equation becomes homogeneous. Now with this information जो हमने already ले रखी है, पिछले क्लास में भी हमने देखा था, nth order linear homogeneous differential equation. So these were the terms here. Let's say that these y1, y2, ये y1, y2 are the actual solutions. With the independent solution, by principle of superposition, we can say this. So the idea is, like, let's say for this nth order linear homogeneous equation, we'll see how to find the solutions for this. But let's say that there are like n number of, like nth degree here, so there will be n number of solutions for that. Like जैसे कि nth root function में आपको x के लिए n roots मिलते हैं, वैसे यहाँ n degree के differential equation के लिए आपको n roots मिल रहे होंगे. And let's say that roots will be the solution. And if these all solutions are independent, in that case, by the principle of superposition, we can say that overall solution of your differential equation becomes a linear combination of this. So I hope you know what is linear combination. Like you are adding this with a constants. So C1, C2, C3 ये जितने दिख रहे हैं, ये constants हैं, and you are doing positive, negative हो सकते हैं, and these are all just added. So this is the superposition. Fine. आपने जितने भी solutions निकाले, n solutions निकाले. Let's say one of the solution is sine x. Let's say another solution is e to the power of x. Let's say the third solution was x square. Let's say. So आप कह सकते हैं कि overall इनका जो linear combination है, let's say 5 times of sine x minus 3 times of ex plus 4 times of x square. तो ये भी एक solution ही होगा आपके given differential equation. That is the linear combination of all your independent solutions. Independent होना जरूरी है. Independent होगा कि नहीं होगा वो भी कैसे देखते हैं वो हम आगे देख लेंगे. Now the complete solution. So अभी जो मैंने आपको बात बताई, this will be like the part of homogeneous. For your homogeneous equation, that means the right hand side function x is 0. Now if it is non-homogeneous, in that case, if it is homogeneous, you'll only have your complementary function. But if it is non-homogeneous, let's say there is some x on the right side, then you can say the solution, complete solution will be complementary function and particular integral. So complementary function is just the general solution. Particular integral, which is generally only like will get only for the non-homogeneous. Homogeneous के लिए 0 माना जाएगा. So that along with the complementary function makes your solution complete. ठीक है, ये लिखा हुआ है non-homogeneous, homogeneous के लिए complementary और particular integral आ रहा है. Fine, I hope this is clear. Homogeneous linear or ordinary differential equation with constant coefficients. तो अभी तक हमने देखा कि P1, P2, P3 जो coefficients होंगे आपके n-1 और n-2 ऐसे so on derivatives के, वो x के functions. But we will start with constant coefficients. That means अभी मैंने आपको क्या बोला कि हमारा differential equation ऐसा हो सकता है. Let's say y triple dash. Y triple dash it means third derivative plus sine x y double dash minus e to the power of x y dash, let's say, plus y equal to
sin x, let's say. So this is also one differential equation, but the point is यहाँ पे जो coefficients आपके y dash y double dash के आ रहे हैं, ये सब x के functions हैं. Rather than that, if it becomes constant, let's say 5, let's say 2, so the equation will look like this. Maybe one of the example could be y double dash minus 3y dash plus y equal to sin x. So you can see the coefficients of your derivatives, y dash, y double dash are all constants. So that is what you're talking about, constant coefficients. In that case, let's say this is that form where k1, k2, kn minus 1, kn are all the coefficients of y and the derivatives. And on the right side, you can see it is 0. So that means we are talking about homogeneous, where the x is 0. In that case, like these are all the constants. What happens is, let's say that if you're saying that d by dx is m, ठीक है, d by dx करोगे ना, तो d by dx y को हम m times of y लिख सकते हैं, because d by dx को आपने m ले लिया. Similarly, what happens? d2y by dx square will become m square times of y, and so on. So इस तरीके से जब आप इसको लिख पा रहे हो, तो in that case, your equation, this equation can be transformed and or can be written in terms of m. How? पहले तो आपने सबके m को कॉमन निकाल लिया. आप देख रहे हो यहाँ पे सब टर्म्स में m ही आ रहा, तो इन सब टर्म्स को m का जो भी कॉमन था वो आपने बाहर किया. And inside what you had was m to the power of n for nth derivative, kn with m minus 1, and then k2 with m minus 2, up to kn minus 1 with the first derivative m, and just kn where you had only kn y. In that case, you are taking y common, and this is left with kn, like this. So from this equation, if you like, अगर आप यहाँ से y छोड़कर बाकी ये जो expression दिख रहा है, which is a function of m, or what is that? This m. This m will also be known as this. ऐसा भी मिलेगा आपको. D by dx is m, or you can say this is d. So that means this thing जो आपने यहाँ लिखा है m की जो पूरा polynomial function हो गया, this is f of d. इसी को आप f of d बोलते हैं, जो कि आपका characteristic और auxiliary equations होता है. F of d equal to 0. So this is a polynomial equation in terms of m or d, जो भी बोलो. So possibly we can also find the roots, है ना? So we can find the roots, and these roots are going to be maybe real, or it can be real and equal, or it can or it can be, let's say, complex roots. So there are all different possibilities. Like these are the types of roots which you can expect here. Complex roots होंगे. So आपको पता होना चाहिए, if your all the coefficients are real, in that case, if you're getting a complex roots, that complex roots are supposed to be coming in pair, that is complex conjugate pair. So if, let's say, if you are getting one of the root to be 2 plus 3i, then there should be another root which should be 2 minus 3i. Condition that all the coefficients of your m to the power of n, m minus 1, जितने भी coefficient दिख रहे हैं, ये सब real होने चाहिए. So we call it a real coefficient polynomial equation. So ये भी एक polynomial equation ही है. Right. So there are 3 different cases, and we'll see each of it one by one. And depending on that is what we'll get we'll get our solution also. Fine. Okay. So this is the auxiliary equation. This is important. यहाँ पे जो मैंने लिख दिया है, ये बिल्कुल कहाँ गया? ये कहाँ लिख दिया मैंने? ये. Fine. So this is your auxiliary equation. You'll always require your auxiliary equation when you are trying to solve your equations. Fine. So let's see. And then auxiliary equations will be giving you roots. So let's say that roots are m1, m2, and so on up to m. With this information, now let's just try to see the different cases जहाँ पर आपके roots अलग-अलग होने वाले. So one of the first case, when the roots are real and different. Real होंगे, अलग होंगे. Let's say 2 आ गया, 3 आ गया, -4 आ गया, ऐसे करके. In that case, you can say the complementary function c1, c2 सब क्या है? Constants है. E to the power of m1x. Let's say m1 2 आया, तो c times of e to the power of 2x. ऐसा. Then so on. Like you'll have different roots, so different. Like you are just providing a linear combination here. है ना? आपके independent जितने roots आए, e to the power of m1x, e to the power of m2x, and so on. तो आपने उसके linear combination को अपने complementary function के बारे में लिख दिया. Second case is
where your roots are going to be equal. Let's say two of the roots m1 and m2 are equal, and that is m. So अगर आपको roots ऐसे मिला, then you will have a first order function. First order कहाँ? Instead of having a constant c1, you will have c1x plus c2. तो ये हो गया आपका first order. c1 के साथ x आ गया, x के terms में आपके first order हो गया, right? So e to the power of mx. Then third roots जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा होगा, c3 e to the power of m3x, c4 e to the power of m4x, and so on. Now there is a possibility that two instead of two, three of the roots are equal. So अगर three roots equal निकल जाएंगे तो वही m1 equal to m2 equal to m3 equal to let's say m. So this will be e to the power of mx, और इसके साथ अब आपके second order आ जाएगा c1x square, c2x and c3, like that, and so on. Like afterwards जो भी terms चल रहे थे वो वैसा वैसा चलता रहेगा. Third case is like when your pair of roots are complex conjugate, यानी कि एक alpha plus j beta तो दूसरा alpha minus j beta. These are the two complex conjugate roots which you will be getting. You will not get one root, one complex root, because your coefficients are real. ऐसा कभी भी पूछे तो ध्यान में रखना. M3, M4 runs like further all real roots. So in that case, for your complex roots, you'll have like alpha जो आपका real part आया था, so that will be your e to the power of alpha x times of a cos beta x and b sin beta x. So you'll have cos and sin with the like यहाँ पे beta beta आ गया, और a b जो भी है वो constant है, जैसे कि c1 c2 लिख रहे थे तो वही c1 c2 ही है, ठीक है. And then c3 e to the power of m3x and so on, जो जैसा चल रहा था बाकी roots के लिए. It could be possible that you are getting two pair of complex roots and are equal. अगर two pair roots आए और दोनों एक अलग अलग आएंगे तो it's simple कि आपका e alpha x a times of cos beta x जैसे आया था, उसके बाद let's say e to the power of gamma x times of a times of cos some other x and beta b some other sin beta x, like that. अगर आपके रूट्स यहाँ रिपीट करते हैं तो यहाँ पे भी जो कांस्टेंट पार्ट आपने a लिखा था उसके बदले आपका फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा c1x plus c2. ये जो b लिखा था साइन बीटा के बदले साथ, वहां पे भी फर्स्ट ऑर्डर आ जाएगा, और आपके फर्दर रूट्स जैसे चल रहे थे वैसे चलते रहेंगे. आई होप दिस इज क्लियर. ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम यहाँ देखते हैं, क्योंकि एक बार मैं सारी थ्योरी पढ़ाना शुरू करूंगा तो आपकी गिनती कम होने लगेगी. ठीक है, एक दो क्वेश्चन हम देखते हैं इससे रिलेटेड, जितना भी देख लिया, और ये बहुत कुछ मुश्किल नहीं है. आपके 3 केसेस हैं, उसको आप बस ध्यान रखें. अरे आज तो वो है ना, सरस्वती पूजा है, पता होगा ना. वसंत भी बोल सकते हो, वसंत भी बोल सकते हो. छुट्टी होनी चाहिए क्या आज, क्या लगता है? ये वीडियो में शक्ल तो दिखनी, एक सेकंड तो आप मुझे गिव मी अ मिनट. ठीक है ना, चलो फाइन. ओके, सो कौन सा क्वेश्चन देखेंगे लास्ट में? सो सी दिस वन. यहाँ पे एक जनरल क्वेश्चन दिया है आपको. What is this question? If a and b are constants, the most general solution, यानी कि जनरल सॉल्यूशन पूछ रहे हैं आपको. ये डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा है, ठीक है. x यहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं, डिपेंडेंट वेरिएबल है, and t is your independent variable. So just to elaborate things, you can say that d by dt is your m, or if you want you can write as d, capital D, जो भी चाहिए. तो उस हिसाब से it should be d square x plus 2dx plus x equal to 0. ये होगा. So of course the right hand side is 0, so it is a homogeneous. Fine. Okay, b. I'll just check, क्योंकि मेरा काम तो अभी समझाना है. So let's say if I'm taking x common, this should be d square plus 2d plus 1, and this is x equal to 0. So this is supposed to be your auxiliary equation, d square plus 2d
plus 1 equal to 0. This is your auxiliary equation. ठीक है, यहाँ के रूट्स निकालना है. D लिखो, M लिखो, anything is fine. ठीक है. So you can see that this is D plus 1 whole square equal to 0. So you can say that D equal to -1 and -1 are the two roots. So two real repeated roots. अब अगर real repeated roots आ रहे हैं तो आपने देखा था कि जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ रहा था वो कुछ ऐसा था, c1x plus c2 टाइम्स ऑफ e to the power of m लिखा था जो आपने, वो यही m है, m. और बस आप ये देखो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल like it was independent variable was t. So as per that -1 डालना है बस, और कुछ नहीं. So this should be, हाँ यहाँ पे भी मुझे t x के बदले t लिख देना चाहिए because t is the independent variable here. So this becomes c1 t e to the power of minus t plus c2 e to the power of minus t. ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आएगा और होमोजीनियस है तो यहाँ पर कुछ भी पर्टिकुलर इंटीग्रल आने का कुछ सीन नहीं है. सो c1 and c2 आर जस्ट कांस्टेंट एंड दे आर राइटिंग इट लाइक दिस, b टाइम्स ऑफ, डिवाइड नहीं है, bt e to the power of minus t plus a e to the power of minus t, like as per the equation options given. So that means b is your option which is correct. आपने सही बताया अंशु, thank you. Fine. So this was just one simple example जो कि बहुत आसानी से बन भी जाएगा. आपको यही मेथड फॉलो करना है. आपने एक आसानी सी चीज देखी कि होमोजीनियस है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑक्सिलरी इक्वेशन निकाल लिया और उसके रूट्स निकाल लिए एंड सो, और उसके जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आने वाला है वो निकाल लिया. ट्राई द नेक्स्ट क्वेश्चन. So this part of question says that the given characteristic equation or the differential equation has two equal roots, then the value of alpha. So basically यहाँ coefficient में जो 2 alpha दे रखा है. So that means f of d जो यहाँ पे होने वाला है वो d square plus 2 alpha d plus 1 होने वाला है, right? And you want repeated roots. तो अगर आप इसे एक quadratic function की तरह देख रहे हैं और आपको रिपीटेड रूट्स चाहिए तो आपको पता होना चाहिए b स्क्वायर माइनस 4ac शुड बी इक्वल टू 0. ये कंडीशन होता है रिपीटेड रियल रूट्स के लिए. सो b स्क्वायर हो जाएगा 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ 1 टाइम्स ऑफ 1 इक्वल टू 0, है ना. a और c दोनों ही, a 1 है, b 2 अल्फा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह से देखो, और c भी 1 है. दैट मीन्स 4 अल्फा स्क्वायर is actually 4, so you can say alpha could be plus or minus 1. Plus or minus 1. That's it. Thank you. इससे बिल्कुल मिलता जुलता एक और क्वेश्चन था. So let me just check if I have it. इससे बहुत ही मिलता हुआ एक क्वेश्चन था जो कि अच्छा था. चलो, no problem. This is also very related to that question, but it's okay. Fine. यहाँ पे ये तो निकलेगा, यहाँ पे चलो. Okay. Now, yeah, this is also that kind of question. ये भी बन सकता है. This is also homogeneous only. अगर आप चाहें तो देखें, ये भी homogeneous है और यहाँ पे भी 10 कंडीशन क्या दे रखी है, कुछ एक दो कंडीशन दे रखी है. Depending on that, you will actually find a particular case. जो particular case होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे आंसर मिल जाएगा. So you can see that there are no unknown coefficients, but there are some all known coefficients here.
So can I say that this is d2y by dx square minus y equal to 0? So that I'll get your auxiliary equation as d square minus 1. And if you equate this to 0, you can say that d should be plus and minus 1. Plus and minus 1. So this is not real and equal, but this is real and different. एक plus 1 है और एक minus 1. So the general solution should be जो particular. Of course, you can see that this is homogeneous. Homogeneous है. So the solution which you can get is c1 e to the power of x है ना. तो x and c2 e to the power of minus x. यही दोनों आने चाहिए. X और minus x ही आएगा, नहीं आएंगे. Now there are two conditions which you have to put. It passes through origin and the point this. So origin वाला case. Origin means 0,0 और जो second condition दिया है ln2 3/4. ln2 3/4. So it's obvious कि आपको ln2 3/4 तो x और y कोऑर्डिनेट चाहिए. तो यहाँ पर आपने y निकाल लिया, यही है आपका y और x की वैल्यू और y की वैल्यू दे रखी है x0 y0 x ln2 and y 3/4 ऐसा. 0 0 का केस दे रखा है तो ये ओरिजिन से जाता है. That means first case यहाँ अप्लाई किया तो y equal to 0, c1 e to the power of 0 will be just 1 and c2 e to the power of minus 0 will also be 1. So c1 plus c2. ये एक केस आ गया. Second case है ln2. So see this 3/4 is c1 e to the power of ln2 plus c2 e to the power of minus ln2. अब मुझे एक बार बता दो माइनस ln2 का क्या मतलब होता है. माइनस ln2 का मतलब हो गया ln2 to the power of -1 जिसको आप ln 1/2 बता सकते हैं. Fine. Minus ln2 is like ln2 to the power of -1. So can I say that this is actually 3/4 equal to c1 also. Like पहले एक बार ये लिख लेते हैं e ln2 plus c2 e ln 1/2. पहले तो मैंने ये लिख लिया. अब आपको ये पता है कि एक्सपोनेंशियल और लॉग फंक्शंस एक दूसरे के इनवर्स होते हैं जो कि हमने क्लासेस में भी अब कई बार डिस्कस कर लिया. तो ये सब इनवर्स हो गए. Which means that this should be 3/4 equal to c1 times of just 2 plus c2 times of just 1/2. और यहाँ पर c1 c2 वाला रिलेशन जो हमारे पास ऑलरेडी है उसको यूज किया तो c1 should be minus c2. That means 3/4 is c1 के बदले -2 लिख दिया तो -2 c2 plus c2/2. How much is this? यहाँ से वैल्यू निकाल लो. 3/4 equal to -4 plus 1. So -3 c2/2. ये cancel, ये इधर 2. So c2 is -1/2 and c1 will become 1/2. आ गया क्या? बहुत बढ़िया. c1 1/2 आ गया और c2 -1/2 आ गया. यानी कि जो आपने इक्वेशन लिखा था वो कौन सा है? वो ये वाला है. इसमें c1 को हाफ और c2 को -1/2 डाल दो. So your solution should be y equal to हाफ कॉमन ले ले रहा हूं मैं. हाफ उन्होंने भी शायद लिया हुआ e to the power of x minus e to the power of -x. So अगर आपने ऑप्शन ए कहा है, ऑप्शन ए नहीं आएगा. ऑप्शन ए बोला क्या आपने? ऑप्शन ए में सिर्फ एक में ही 1/2 है ना. अंशुल, हाँ जी अंशुल, दोनों वाले का कुछ देखो. ऑप्शन सी देखो. ओके, पिछले वाले का है ये. इधर टाइम लिख के नहीं आता है. चलो ठीक है, कोई बात. अभी वाला देख लो. सी ऑप्शन आ रहा है. इफ आई एम राइट, सी इज द करेक्ट आंसर एज पर दिस कैलकुलेशन व्हिच वी हैव डन. अगर आपको स्क्रीन को देखना है पूरा तो ये देखो.
ये देख लो कंप्लीट सॉल्यूशन एक जगह रख दिया मैंने। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। यस गाइस, क्लियर है नहीं है जल्दी बता दो। 7 पीपल 7 आंसर्स, 7 यस और नो चाहिए मुझे। चलो आपकी पोलिंग चालू है। यूपी से कौन कौन है भाई पहला बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू आर फ्रॉम यूपी उत्तर प्रदेश? अंशुल आप हो, और कोई है? यूपी उत्तर प्रदेश, हाँ हाँ ठीक है ओके। इलेक्शंस है ना आप लोगों के? 5 आज भी था क्या? 5 को था ना, आज ही तो 5 है। आज था क्या आप लोगों के इलेक्शन? याद नहीं है। चलो तो पोलिंग शुरू हो गई है उत्तर प्रदेश में, इधर भी पोलिंग चाहिए बेसिकली। पता नहीं कहाँ रहते हो आप, उत्तर प्रदेश में ही रहते हो क्या? चलो, सो आई वांट ऑल 7 पीपल, अदरवाइज आई हैव टू पिक देम। या म्यूट म्यूट करके कहीं चले जाते हैं क्या? यस गाइस, इज इट क्लियर और नॉट? टेल मी। तेजश्री, 4, अच्छा 2, एक तो नहीं, और कोई छूट रहा है? नहीं, एक तो तेजश्री इज हियर, 1 पर्सन इज नॉट। ओके, एस, एस स्टैंड्स फॉर यस, पता है मुझे। चलो, good, thank you. So it is clear, right? So this is one way of doing the question, or depending on the values given, like in this case you can say ln2 3,4, और ये थोड़ा सा कैलकुलेशन था बस, वरना इसमें ऐसा कुछ नहीं था जो हमें नहीं आना चाहिए या नहीं पढ़ा हमने। द कैलकुलेशन पार्ट वाज ट्रिकी, जहाँ पर आपको ln2 वगैरह का ये जो होता है ये पता होना चाहिए। इजी है तो बहुत बढ़िया, आपने जवाब बताया वैसे। चलो, दिस इज नॉन होमोजीनियस, दिस इज होमोजीनियस, अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी पर्टिकुलर। चलो ये क्वेश्चन आपके लिए, फटाफट बना दो तो। नहीं, अब ये क्वेश्चन आप बाद में बना। चलो आगे कुछ पढ़ते हैं, ये भी पर्टिकुलर ही है। चलो विल सी मोर फ्यू मोर टॉपिक्स, ऐसा थ्योरी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये मैं आपको इधर लेकर आया था बिकॉज दैट वाज टू मच ऑफ थ्योरी। ओके, सो दिस इज वन मेथड ऑफ अनडिटरमाइंड क्वेश्चन कोएफिशिएंट, ये मैं आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको एक मेथड और बता देता हूँ, दैट इज मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। ये आपको पढ़ना भी है, वैसे पिछला वाला मेथड भी ऐसा कुछ नहीं कि नहीं पढ़ना, आपके अच्छे क्वेश्चंस के लिए वही काम आएंगे। So let's see this method. It says that this is the method of variation of parameters. So basically you are going to vary your parameters. How and what we have to do. So obviously we are talking about non-homogeneous. Homogeneous is already done. Homogeneous के लिए वो 3 cases पढ़ लिया काफी है. These are the things which we need to know about the non-homogeneous part. So that is your Rx. You can see. So this is for the second order. You'll also see for the third order. This is for your second order non-homogeneous equations. Of course, यहाँ पर अगर आप देखोगे that the variation of the parameters, you can see that px, qx, like we haven't mentioned it to be constant here. We have mentioned it to be function of x. So with p, q, r be function of variable x that is independent. After finding the general solution for the homogeneous part. आपने जब जनरल सॉल्यूशन फाइंड कर लिया, उसके बाद देयर इज वन फॉर्मूला, द एक्सप्रेशन फॉर फाइंडिंग द पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एंड दैट इज Lagrange's method of which gives a particular solution, and that is given by, ये जो एक्सप्रेशन दिख रहा है ये आपको यूज करना पड़ेगा। The particular solution is given as minus y1 times of integration of y2 times of r divided by w, क्या है ये मैं बताऊंगा, dx इंटीग्रेशन प्लस y2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ y1 r by w। ये एक्सप्रेशन आपको याद कर लेना है। And see, let's see what is this y1 and y2. First of all, y1 and y2 are the independent solutions. आपके जो इक्वेशन दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, सेकेंड ऑर्डर है, तो उसके 2 सॉल्यूशंस निकलेंगे। इन दोनों सॉल्यूशंस को आपने अगर यूज किया, so using that to, like, you'll have 2 independent solutions, and that is what is y1 and y2. What is r? R is the term on the right side of your differential equation. यहाँ देखो, this is your r, ठीक है? वो r ऐसे लिखा या ऐसे लिखा, दोनों एक ही है, ठीक है? r of x नहीं लिखा है, but r ही लिखा हुआ। Now what is this w? W के ऊपर you will get direct questions also, like just find the Wronskian. This is Wronskian. What is this Wronskian? Let's say if we are talking about second degree, जो कि हम यहाँ second degree ही देख रहे हैं, in that case Wronskian is the determinant, जो आपको कहाँ से मिलेगा?
y1, y2, y1 dash, y2 dash. So this determinant will be y1 times of y2 dash minus y2 times of y1 dash. ये एक्सप्रेशन आपको याद रखनी है. You have like you're already getting question on this. Previous years के क्वेश्चन देखोगे तो रॉन्सकियन यहाँ से निकलता है. इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस होते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, उसका सेकंड डेरिवेटिव, ये डिटरमिनेंट और ये वैल्यू जो आ गई, दिस इज योर रॉन्सकियन फॉर two independent solutions. Now what about the three independent? अगर three independent रहा तो y1, y2, y3, y1 dash, y2 dash, y3 dash, y1 double dash, y2 double dash and y3 double dash. इसका जो determinant value निकलेगा वो आपका Wronskian हो जाएगा for the 30. What are these y1, y2, y3? These are the independent solution which you are getting. Right? Now, if this is also clear, this was the expression we are going to use. ठीक है, एक बार फिर से देख लो और मैं आपको देता हूं कुछ क्वेश्चन, मतलब we will discuss it. ये एक्सप्रेशन देख लो, याद करनी याद कर लो, and let me give you one question. We will discuss it together. वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है, ये मेथड है. Okay, so let's see one of this. चलो पहले एक आसान वाला देखते हैं. आसान मतलब नया है, इट विल बी कंप्लीटली न्यू अगर आपने ये टॉपिक अगर पहले ध्यान से देखा ना हो तो. लेट्स सी दिस. द क्वेश्चन इज the question is solve the non-homogeneous ordinary differential equation which is given by y double dash plus 9y equal to sec 3x. ये दे रखा है, right? This is your non-homogeneous equation which we have to solve. So you can see this is your r of x. Fine, sec 3x. Now if you see your like start with your homogeneous part or look for your complementary function, that is y1 and y2, the independent solutions. So you can see this can be directly written as auxiliary equation to be d square plus 9 equal to 0. From here you can say d square is going to be minus 9. Therefore d will be plus and minus 3j. 3i, 3j जो भी बोलना है. So you are getting complex conjugate roots. Complex conjugate roots. और complex conjugate roots में जो आपके independent solutions आते हैं, जो हमने अभी भी बताया ना कई बार y1, y2 and so on, उसका linear combinations करते हैं, तो वो मैं लिखता हूँ. आप पूछ रहे हो जे कैसे है, आप केमिकल से हो ना. ओके, आप उसको इमेजिनरी रूट समझ लो, d इक्वल टू प्लस एंड माइनस 3i. ठीक है, अभी अभी चलेगा ये, या ये आप पूछ रहे कि कॉम्प्लेक्स रूट्स कैसे आए? इज इट गॉट इट? ओके गुड, थैंक यू. राइट, सो दीज आर द कॉम्प्लेक्स, यहाँ लिखा ना मैंने कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स लिख दिया मैंने यहाँ पर ऐसे. So these are the two independent solution y1 and y2, and this is the linear combination. That means this is your homogeneous equation, homogeneous solution. Homogeneous differential equation के part का ये solution YH निकाला मैंने. Now let's say मैंने कहा कि y1 and y2 are these things. So now we will try to find your Wronskian.
रॉन्सन के ऊपर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, आगे करने को कुछ बोलेंगे नहीं, सिर्फ रॉन्सन निकालने को बोलेंगे, ये भी पूछें। सो y1 y2 y1 dash y2 dash which is cos 3x, किसी को भी 1 मानो किसी को भी 2 मानो, sin 3x, cos 3x का डिफरेंशिएशन किया तो -3 sin 3x, और sin का किया तो 3 cos 3x, और अगर आपने इसको ये कर दिया 3 cos square 3x minus and minus plus 3 sin square 3x, so sin square and cos square becomes 1, so just become, yes, thank you, that's 3. So Wronskian निकाला, मैंने कहा ना, there will be 1 or 2 marks question directly only for Wronskian. For that you definitely need y1 and y2, and then you can find your w. Now you found your w. Now let's move to the finding the that was particular solution or yp. So this is the expression is minus y1 integration of y2 times of r divided by w dx plus y2 integration of y1 times of r divided by w and dx. rx क्या था, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, r was sec 3x, ठीक है, और y1 y2 अपने पास है, y1 लिख दूं मैं, y1 क्या था, cos 3x. अब आपने y1 y2 डिसाइड कर लिया, तो अब चेंज मत करना, ऐसा नहीं कि आधे रास्ते में आकर हाँ सर ने बोला था कुछ भी ले सकते हैं तो ले लिया, ऐसे नहीं, यू हैव ऑलरेडी डिसाइडेड कि y1 कौन सा है y2 कौन सा. सो दिस इज minus of cos of 3x integration and y2 which is sine of 3x by w which is 3 into sec of 3x dx plus y2 which is sine 3x integration cos ही है ना, माइनस तो नहीं है, cos 3x by 3 and this is sec 3x dx. You can clearly see that cos and sec of 3x will just become 1 and sine into sec will become tan. मैं यही कहीं बता दे रहा हूँ, one of the expression is tan and one of the expression is 1. So the integration of tan will become minus cos 3x, tan का integration 3 नीचे लिख दे रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा सही से लिखो, 3 tan का इंटीग्रेशन हो जाएगा ln of sec x, or otherwise you can say minus of ln of cos x. So ln of sec x लेते हैं, ln of sec like 3x. अब ये 3 है तो 3 नीचे आ जाएगा, आई थिंक 3 नीचे ही आएगा, करेक्ट, तभी तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 by sec और ऊपर से tan आएगा तो tan बचेगा और 3 नीचे रहेगा, नीचे सी 3 मल्टीप्लाई से नीचे कैंसिल हो जाएगा. ओके, दिस इज फाइन. एंड sin 3x by 3, और ये दोनों मिलके cos 3x sec 3x मिलके 1 हो गया था, तो इंटीग्रेशन ऑफ x which is just x. That means overall your yp is, let me write the positive term first, ऐसे चलो जैसा भी लिखना है, minus of cos of 3x ln of sec of 3x. ln of sec of 3x को अगर आप चाहें तो minus of ln of cos 3x भी लिख सकते थे, divided by 3 into 3 9 and plus x times of sine of 3x by 3. अगर ये एक्सप्रेशन मिल गया है और आपने यहाँ पर YH भी लिखा हुआ है, a cos 3x plus b sin 3x. So overall your complete solution y should be yp which is the particular part and y homogeneous. अब आप इन दोनों को साथ में लिखो और ये आपका solution है. This is one of the way of doing it. So of course there are more question on it, and if you want, let me see if I can do it. I'll do more question. ठीक है, अभी मैं एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया जिसमें सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन भी है, फॉर्मूला कैसे यूज हुआ वो भी है. So I'll see if I can do one more question now. So that was your particular solution case. ठीक है. Method of variation of parameters. So depending on that R, we found Wronskian. मैंने कहा कि there will be a direct questions to find Wronskians also, and of course if you have to find further solution for particular part, that also you can do.
This is the second way of finding the particular solution, particular integral PI जिसको आपने बताया, which is generally for your non-homogeneous one. So यहाँ पर आप देख सकते हो that x लिखा है हमने यहाँ पर. This is your x which is function of x and everything which we have already discussed. तो मैंने कहा कि इसको आपने f of d बताया. So this becomes actually f of d times of y equal to x, like for the non-homogeneous part. और अगर यहाँ पे लिख रहे हो तो इसको अभी x हटा 0 हटाकर यहाँ पे भी मतलब x लिख दो. Fine. Okay. Now with this, there are some cases which we will follow and see how to do that. Your non-homogeneous part, Rx, if it is of the form e to the power of ax, then what you can do is your particular integral will directly become 1 by f of a e to the power of ax. So let's say if it is x equal to e to the power of 2x, तो 1 by f of 2 कर दीजिए, यानी कि d के बदले 2 लिख दीजिए और उसके साथ e to the power of 2x भी लिख दीजिए. Condition that f of a is not equal to 0. What happens if fa is 0? So if f of a becomes 0, then you just add one x, a factor of x, add in the sense multiply, okay? Add as a term which has to be added in. So that is x times of 1 by f dash of a e to the power of ax. So now instead of putting a for f of d, you are putting it for f dash of d. Condition that f dash of a should not be equal to 0. And if this also becomes 0, then you can make the term to be x square and then multiply it by 1 by f double dash of a e to the power of ax. Again, the condition is that the double derivative at x equal to a should not be equal to 0 and so on. Fine. This is one way when you're the non-homogeneous part or the r of x is exponential function e to the power of ax. वही a को यहाँ पर use किया हमने. Second case could be sine ax plus b or cos ax plus b. So these are sine terms and cos terms. अगर ऐसा हुआ, so what you can do is for the function of f of d square, I'm not saying f of d, but f of d square. So let's say f of d is, let's say f of d was d square plus 2d plus 1. So I'm just talking about your d square. You need to replace your d square by minus a square. Just replace your d square by minus a square or higher terms also, but not d. So if you'll replace this, probably you will get this. And then depending on what you have, you can actually operate. Let's say अगर आपको 1 by d मिल गया, let's say for example 1 by d of sine 2x मिल गया, ठीक है, ऐसा कुछ मिल गया, आपने d square को minus a square से replace कर दिया. D square in this case will be minus 2 square, that is minus 4. So 1 by d, d means differentiation. So 1 by d will mean integration of sine 2x, which will be minus cos 2x by 2. Similarly, if it is 1 by d square, जो कि यहाँ नहीं होना चाहिए, लेकिन let's say if you have 1 by d square means double integration, or if it is simply d, that means you need to differentiate this like that. Fine. So we'll see one question and then the things will be clear. Okay. Now what happens if your this term, that is, like I said, यहाँ पर मैंने एक dash ज़्यादा लगा दिया. If your first derivative at this minus a square becomes 0, in that case again वो आपने वो factor लगाना है x का, और differentiation में आपने d square को minus a square से replace करना और ये sin ax. उसके बाद जो operation जैसे मैंने यहाँ बताया वैसा अगर होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे. Condition is that your first derivative should not be 0 at minus a square. If this also becomes 0, तो कुछ भी नहीं है, वही करना है जो पहले कर रहे थे. Get your term as x square along with this, do the double differentiation, put d equal to minus a square, and this is sine ax plus b. Again, this should not be equal to 0, otherwise you'll have to keep doing it. This was your second case, and this is your third case. When your expression becomes x to the power of m. If it is x to the power of m, what you have to do is, let's say, for example, your f of d is
1, let's say it is d plus 1. f of d is 1, d plus 1. So मैंने आपको लिखा है 1 by f of d of x to the power of n. That means 1 of f of d, which will be 1 by 1 plus d. इसका एक्सपेंशन अगर आपको याद होगा, it should be 1 minus d plus d square by 2 and so on, right? Like this. और अगर वो 1 minus d होता तो सारे टर्म्स पॉजिटिव होते हैं, 1 plus d square by 2 and so on. Fine. So in that case, what you have to do with your x to the power of m, you have to do all these expressions. That means if it is 1, simply multiply it with x to the power of m. If it is minus d, you need to differentiate it. If it is d square by 2, you need to double differentiate it and so on. तो ऐसा करेंगे तो आपकी जो एक्सप्रेशन आएंगे, दैट विल बी योर पर्टिकुलर सॉल्यूशन. डोंट वरी, विल सी क्वेश्चन. अभी मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, क्वेश्चन देखेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी. Fourth case is where your expression x is actually e to the power of ax times of v. V is also a function of x, which could be sin x, जो अभी हमने देखा, cos x, या फिर exponential. Exponential generally यहाँ पे already considered है तो नहीं होना चाहिए. x to the power of m, या यानी कि अलग expression जो हमने और cases में देखे. You have to do one thing. Instead of 1 by f of d, you will have to do 1 by f of d plus a. A कहाँ से आया? e to the power of x से आया. और e to the power of x को अलग किया और v ले लिया. अब जैसा जैसा आप पिछली बार कर रहे थे फॉर एक्सपोनेंशियल, फॉर पॉलिनोमियल फंक्शन और फॉर साइन फंक्शन, जो ऑपरेशंस आपको करने पड़ रहे थे, जैसे कि साइन कॉस में डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर लिया, या फिर पॉलिनोमियल में हमने वो उसको रिवर्स करके देखा और उसकी इंटीग्रेशंस वगैरह देखी, या डिफरेंशिएशन है तो डिफरेंशिएशन. सो यू विल हैव टू फॉलो ऑल दिस थिंग. दिस इज हाउ यू विल बी डूइंग दीस क्वेश्चंस. लेट अस सी, जस्ट अ सेकंड. So I'll suggest, नीचे के क्वेश्चन शायद हमने कर लिए. Yes, this is direct question for particular integral. I'll suggest you to solve this. Very easy, कुछ भी नहीं है, और चाहो तो सब लोग इसका जवाब दे सकते हो. And give me 1 minute. Try this question. मैं कुछ आपके लिए ढूंढ रहा हूं. मैंने यहाँ पे बस एक चीज थोड़ा सा ध्यान देना था, वो है यहाँ लिख दे रहा हूँ. 1 by 1 plus d will be 1 minus x, और d लिख लो, minus d plus d square minus d cube and so on. 1 by 1 minus d will be 1 plus d square plus d cube and so on, like that. Right? So let's see. अगर आपने अभी तक जवाब नहीं बताया है guess, तो हम देख लेते हैं. पर्टिकुलर इंटीग्रेशन निकालना था, और ये जो केस है, दिस इज योर r और x which is just exponential function. हाँ जी, इसमें सर dy over dy दे रखा है. हाँ यार, तो गलती है यार, इतना तो समझ जाओ, इतना क्या परेशान हो रहे. x होगा वो, और क्या है. dy by d होता तो 1 हो जाता ना, करोगे सॉल्व नहीं होगा ना, फिर 1 हो जाएगा तो उधर चला जाएगा, सॉल्व करोगे तो सॉल्व करोगे. x है भाई, कोई परेशानी नहीं है. फाइन. और यहाँ पे शायद y भी छोड़ा, अब ये लिखा हुआ है, मैंने खुद नहीं निकाला है, तो मैं तो स्क्रीन निकाल लेता हूँ कहीं से. चलो, सो मैं लिख दे रहा हूँ आपका इक्वेशन, अगर आपको दिक्कत हुई है तो. ये है d2y by dx square plus 4dy by dx
प्लस 3y इक्वल टू 3e टू द पावर ऑफ 2x। फाइन। एफ ऑफ डी अगर आप चेक करना चाहेंगे तो आप फटाफट बन जाएगा, अगर उसमें कोई गलती थी तो कोई बात नहीं है। डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3, ये हो गया एफ ऑफ डी। और जो x है वो 3e टू द पावर ऑफ 2x है। अब शायद फटाफट आपने आंसर बताया है, सी और डी बताया, सी और बी बताया। देख लेते हैं, एक सी और एक बी। ओके, 3e टू द पावर ऑफ 2x आया है, और यानी कि a की वैल्यू अब 2 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन आना चाहिए वो हमने अभी पढ़ा है 1/f ऑफ यहाँ पर a e टू द पावर ऑफ ax, और यहाँ पर एक कांस्टेंट भी है वो है 3। तो 3 का कांस्टेंट जैसा है वैसा रहेगा। दैट मीन्स 3 टाइम्स ऑफ 1/a के बदले अगर आपने डाला 2, सो 2 स्क्वायर इज 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ 2 इज 8 प्लस 3, और यहाँ पर आ गया e टू द पावर ऑफ 2x। So 3/12 3 15 e to the power of 2x. So it is 1/5 e to the power of 2x. हाँ जी, वो तो आपने किसी ने एक सही ने बताया, एक ने गलत बताया। Fine. So one of the answers, of course, B is the right answer. You can see. किसने दिया भाई? हाँ, ठीक है प्रियंका, आप प्लीज चेक करो, कुछ गलती हुई है शायद। ठीक है, आई थिंक पॉसिबली यू गेट द राइट आंसर आल्सो। गलत आया तो सही भी आएगा। ठीक है, एक्सपोनेंशियल वाला केस था, यहाँ पे सिंपली सारे डी को ए से रिप्लेस कर दिया, और कांस्टेंट जो 3 पड़ा है वो रहने दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। आई होप दिस इज क्लियर। फाइन, दिस इज एज सिंपल एज दैट, लाइक इसमें कुछ करना नहीं है। ये होमोजीनियस है जो कि हम शायद देख चुके हैं, ये भी होमोजीनियस है, अगर टाइम मिलेगा तो हम उसके ऊपर वापस आएंगे। ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है, मैं इसके ऊपर भी वापस आना चाहूंगा। ये भी होमोजीनियस ही है, ये भी अच्छा ही है एक्चुअली, ज्यादा करके होमोजीनियस लिख रहे हैं। एक क्वेश्चन था, चला गया। चलो नो प्रॉब्लम, लेट मी गिव यू सम क्वेश्चन। मैं यहाँ लिखता हूँ, मुझे 1 मिनट। नोन क्वेश्चन हैं ये सब, मैं बता दे रहा हूँ आपको। एक क्वेश्चन आप लिख लो, डी स्क्वायर प्लस 4y इक्वल टू cos 2x। डी स्क्वायर प्लस 4y टाइम्स इक्वल टू cos 2x। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका एफ ऑफ डी, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालो, कुछ भी और निकालना, फटाफट इसी की प्रैक्टिस करें। सो वाई डी इज एक्चुअली डी स्क्वायर प्लस 4, और cos 2x को देखेंगे, निहारेंगे, ये x है, तो आप बता सकते हैं a is actually 2. So yp will become 1/f of d, where d is replaced by minus a square times of cos of 2x जो यहाँ दे रखा है। So d square is actually like अगर a ये है तो d square equal to minus a square will become minus of 2 square, which is minus of 4. So if this is minus of 4, this will become minus 4 plus 4 cos 2x, which is like 1/0 वाला form. So f of minus a square जो आ रहा है वो 0, so we cannot follow this. Instead of that, we can say that this will become, yp will become, देख ले रहे हैं, x sin x by 2 आपने एक आंसर दिया, yp p है ना, p will become 1/f dash of minus a square cos of 2x। अब ये f dash क्या है? f of d आपका है d square plus 4, f dash of d हो जाएगा 2d, तो ये हो गया 1/2d cos 2x। अब यहाँ पर d है, तो d का मतलब मैंने आपको बताया था कि d का मतलब हो गया 1/d आ गया, तो आपको ठीक है वो भी देख लेते हैं, आपका जो भी आंसर आ रहा है देख लेते हैं। सो दिस शुड बी 1/2 जो बाहर ही है,
1 by d का मतलब होता है इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। अगर d का मतलब d by dx है तो 1 by d का मतलब हो गया इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू dx। That means you have to integrate cos of 2x with respect to x. 1 by 2 cos 2x comes from sin 2x और divide by 2 आ जाएगा. So it should be 1 by 4. Yes. एक टर्म जो मैंने यहाँ पे मिस कर दिया वो है कि अगर आपने डिफरेंशिएशन किया है तो यहाँ पर x आ जाना चाहिए। इंटीग्रेशन आपको x का नहीं करना है, इंटीग्रेशन आपको वो cos 2x वाले टर्म का ही करना है। So that means this should be x sin 2x by 4. This is your particular integration. ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगा ये। x के साथ कुछ लेना देना नहीं है, x का एक फैक्टर ऐड होता जाता, मल्टीप्लाई होता जाता है। काम आपको अपने दिए हुए जो नॉन होमोजेनियस पार्ट है उसी से करना होता है। फाइन, सो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चन। आई होप दिस इज क्लियर। फटाफट बता दो समझ में आ गया या नहीं। एक क्वेश्चन में ओके, थैंक यू। एक रियल वाले का देख लेते हैं, मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन का देख लेते हैं। मैंने आपको बताया है कि उसमें बस वही काम करना है। स्क्वायर प्लस 4 नेक्स्ट। ओके, सो अगर आप देखोगे क्विकली तो आपका एफ ऑफ डी डी स्क्वायर प्लस डी है, आपका आर या फिर एक्स जो भी बोल लो, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 है। यानी कि ये आपके पॉलिनोमियल फंक्शन वाला केस होता है जिसमें कि तीन टर्म्स है। एक्स टू द पावर ऑफ m जो मैंने बताया था, ये तीन एक्स टू द पावर ऑफ m है। एक में 2 पावर, एक में 1 पावर, एक में 0 पावर। ऐसा देखो आप, लीनियर कॉम्बिनेशन की तरह देखो इसको। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे देख रहे हैं तो आपका एफ ऑफ डी शुड बी 1 बाई एफ ऑफ डी, और यानी कि एफ डैश इनवर्स सॉरी वाई पी, your yp should be like this, x जो आपने लिखा। तो दिस इज एक्चुअली 1 बाई डी टाइम्स ऑफ d प्लस 1। मैंने d स्क्वायर प्लस d को ऐसा लिखा, और इधर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। मैंने अभी आपसे कहा था कि 1 बाई डी प्लस 1 का एक्सपेंशन होता है, और वो एक्सपेंशन है 1 बाई डी प्लस 1 इज 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर। मैं इसके आगे नहीं जा रहा हूँ, जा सकते हो अगर मन हो तो। नहीं क्यों जा रहे हैं, क्योंकि आपको अगर डिफरेंशिएशन करनी है तो आपका हाईएस्ट टर्म जो यहाँ पर है वो एक्स स्क्वायर। सो इफ यू हैव लाइक, अगर इसके बाद में डी क्यूब लिखती हूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सारे टर्म 0 हो चुके हैं। सो आई एम राइटिंग दिस लाइक 1 बाई डी। आप चाहें तो 1 बाई डी को भी ऊपर ले जा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। सो द अदर टर्म्स आर 1 माइनस डी प्लस डी स्क्वायर एंड सो ऑन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4। सो डील विद दिस 1 बाई 1। जैसे कि पहले 1 के साथ किया, 1 बाई डी भी बाहर ही, पहले 1 के साथ किया तो सब कुछ वैसा का वैसा आ जाएगा, 2x प्लस 4। माइनस डी का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन एंड नेगेटिव साइन। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस 2x, डिफरेंशिएशन ऑफ 2x इज माइनस 2 एंड 4 विल बी 0। डी स्क्वायर इज डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर, 2x और 4 का डिफरेंशिएशन डबल करेंगे तो 0 हो जाएगा। सो दिस इज 2। The terms which might get cancelled is minus 2, 2, 2x, 2x. So we have 1 by d times of x square plus 4. 1 by d means again integration. So x square will be x cubed by 3 plus 4x. I'll put a constant here. The reason is sometimes people ऐसा ऊपर ले जाके पहले करोगे तो एक constant term दिखेगा, हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने पहले इंटीग्रेशन करी है या डिफरेंशिएशन करा है। Depending on that, you may get such expressions. So I'm just putting C here because it depends whether you are trying to do the 1 by d first or the differentiation first, depending on that. So I'm leaving it like this. So this is your
particular solution. Fine. And likewise, you have more methods to do. मतलब more ways of doing it. Fine. Let us see. अभी ऐसा देख लिया, बाकी के केसेस में भी ऐसा ही हो रहा था. Whether it is साइन का देख लिया, एक्सपोनेंशियल का देख लिया, अलजेब्रा का देख लिया, ऐसा करके. Fine. Let's see one question. Question तो देख ही रहे. One more method, and that method is थोड़ा लंबा पड़ता है कभी-कभी, but कई बार ये आसान पड़ता है. And of course, you have to know this. This method is method of undetermined coefficient. Undetermined coefficient. That means the coefficients are like not undetermined. So non-homogeneous equation again, constant coefficients again. First we find the complementary functions of the homogeneous part. जैसा जैसा अभी तक करते आ रहे हैं, बस वैसा वैसा कर रहे हैं. Then we will solve to find the particular solution by certain method. What is that method? For your R of x, जो कि non-homogeneous part होता है, if your R of x looks like this, if it is e to the power of alpha x, if it is x to the power of n, जैसे कि अभी देखा ना हमने e to the power of 2x, फिर हमने देखा x to the power of x square plus 2x plus 4 ऐसा करके. So this is polynomial type, or cos omega or sin omega. Or third possibility is it may be like this, like e to the power of alpha x and cos का term. In that case, your particular solution will be like, for this one it should be of this form, for x to the power of n it will be of this form. यानी कि अगर let's say for example अगर आपको यहाँ पर x square आ गया, तो आपको इसके जो particular solution है उसको ऐसा लेना होगा, a times of x square plus b times of x plus c. That means you'll have to consider all the lower powers of x now. So x square is the term here, so you'll have to consider x square, x, and x to the power of 0. If it is, let's say, x cube, so you'll have to consider x cube, x square, x, and the constant part, like that. अगर आपके टर्म्स में r of x में cos और sin आए, दोनों में से कोई भी आएगा तो भी आपको दोनों का कॉम्बिनेशन लेना, बिकॉज डेरिवेटिव्स आ सकती हैं, तो cos का डेरिवेटिव sin, सो cos रहा तो sin और sin रहा तो cos, दोनों ही टर्म साथ में लिखो. अगर वो e to the power of alpha cos, e to the power of alpha sin हो, तो उसे आप with a factor of e to the power of alpha x लिखो. These are the coefficients, the form of coefficients you are going to have, and then we'll see what to do. This is not done here. We'll have to put them back in the equation and then find some things, like few things. So the idea is substituting this ypx as per the table in the equation and determining the unknown coefficient. So we don't know the coefficient. We know that these are the possible terms which will have. What are these unknown coefficients? These are the, like this one. जैसा मैंने यहाँ लिखा, I'll just highlight this. Unknown coefficient. What are these unknowns? Just C, C1, Cn minus 1, C1, C0, or for this case C1, C2, for this case C1, C2. These are your undetermined coefficients. तो आपने अभी form निकाल लिया है. The form will be like cos omega x, sin omega x, but the coefficients along with that is not known to us. So that is why we'll follow some instructions. What are these instructions? The instruction is like we'll be putting it there and we'll be trying to find this. We'll see what to do now. Other than that, there is one point which we have to remember. वो point क्या है? Modification. Sometimes you'll have to do the modification. When and why, and like how. Why नहीं जाएंगे? If any of the ypx is already there. So let's say you got an expression of x square in your particular solution, but your let's say you got this in your particular solution, but you already have such term in your homogeneous part. If you already have this in your homogeneous part, you will have to multiply this with a factor of x. अभी हमने देखा था ना वो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में x लगाते जा रहे थे और फिर ऑपरेशंस कर रहे थे, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव भी 0 आया तो x स्क्वायर करके वो ऑपरेशन कर रहे थे. Similarly, here also if you get some term in your particular solution which is already there in your homogeneous, that means you cannot directly solve for particular solution in this method. Like in the previous method, we were directly solving for particular solution. In this method, we will have to find your homogeneous part, and then only we can find your particular solution. Also for the first method जो हमने देखा था अभी, variation of parameter वाला में, in that method also you will have to find your homogeneous part, then only you can go for solving for your particular solution. So in case, let's say some of the terms are already there in your particular homogeneous equation, you need to multiply it with x or maybe x square if it has double roots.
So if it is having double roots, then you will have to multiply x square, because वहां पर अगर e to the power of alpha x होगा, अगर डबल रूट्स होंगे तो x टाइम्स ऑफ e to the power of alpha x भी होगा. इसीलिए जो आपको लेना पड़ेगा वो होगा x square e to the power of alpha x, like that. So you will have to consider two of the like x square तक जाना पड़ सकता है. 3 रूट्स रहे तो x cube तक जाना पड़ेगा. Now what you'll do is, now you'll be putting them in the table and like ऐसा कुछ नहीं, ये मतलब सिर्फ ये लिखा है कि मोर देन वन टर्म्स होंगे तो सारे टर्म्स के फॉर्म को लेना है. लेट अस सॉल्व वन क्वेश्चन. वैसे तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा है. लेट्स से लेट अस ट्राई कि जो हमने अभी अभी जो क्वेश्चन बनाया है वो उस मेथड से बनेगा और कैसे बनेगा. लेट्स सी दिस. अभी बिल्कुल एक क्वेश्चन बनाया ना हमने, ये I hope this will be clear with this question. देखो, सबसे पहले आपने क्या किया, आपने इसका auxiliary equation form किया. Auxiliary equation, now I believe that you can directly form the auxiliary equation, that is d square plus d equal to 0. Therefore, you can say d times of d plus 1 equal to 0, which gives d equal to 0 or d equal to minus 1. So your homogeneous part should be c1 e to the power of 0 आया तो जो 0 से कांस्टेंट हो जाएगा, 0x लिख देता हूँ एक बार, और सेकंड हो गया c2 e to the power of minus x, right, minus 1 के. So it is just like this. यानी कि yh is c2 और c1 जो भी लिख लो minus x. ये कांस्टेंट है तो बस c लिख दिया, तो c का कुछ ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है. Now look into your this part. This is your x, the r of x जो भी आप कह रहे हो non homogeneous part के लिए, which is a polynomial equation and the highest order which you see is x square. So even if it was only x square, आपको जो इसका particular solution लेकर चलना है, that should be c1 c2 ले लिया तो c3x square plus c4x plus some constant c5. Fine, right? Even if it was only x square, then also you'll have to take it like this. Now also you'll have to take it like this. So with this accordance, like we assumed that yp is c3x square plus c2 c3 c4 c4x plus c5. Let us check the equation we have. What do we have here? Come to the question here. It is y double dash plus y equal to x square plus 2x plus 4. I have just written my equation again. Double derivative means double dash and y, like this. Y dash, sorry, it should be y dash. Y dash. So we have to put the double derivative and single derivative of the particular solution. So if you see yp is this, so yp dash should be 2c3x plus just c4, and yp double dash should be 2c3. That's it, no x, and that's it. So what you have to do is you have to put these values here. Fine. So that means, like if you're putting y double dash, so y double dash is 2c3x. Okay, you will have to check one more thing. Just a second. यहाँ पे y वाला पार्ट नहीं था, शायद इसीलिए डिस्टर्ब हो रहा है. c3x c4. Is there anything repeating term? Any term from your particular solution? I think this should be the case. X से multiply करना पड़ेगा, so because
Just wait for a minute. Double dash is fine. ये जो d equal to 0 आ रहा है, because of that we should follow with the x square का x हो जाना चाहिए, should be x cube. So this is a special case here with this condition. Into the solution where it's part. This special condition actually solution directly. Let me see. There are special conditions also. ऐसा भी होता है, बहुत complex हो जाता है कुछ. If I'm right, this needs to be. Let us try it with that, and I hope this will work. What should work? Because there's a constant part in your. Your this one. So because if I'm right, this is your h c1 plus c2 e to the power of minus x. So the c1 term, which is a constant term here, because of that there will be a repetition in comparison to your homogeneous c1. Because of that, the term from your homogeneous part, this is the term which is repeating. So we should be multiplying it with x. And if we multiply it with x, let me see. Chalo, I'll get back to this question. ये एक केस आ रहा है, इसीलिए इसमें मैं कुछ करूंगा, but I should not waste your time. Let me just try to make things clear with some other question for now. It's just that questions were long, तो मैंने ये वाला उठाया था, but ये exceptional case. Wronskian method is done. Let me give you one question. लंबा बहुत हो जाता है, इसीलिए मैं इस मेथड में थोड़ा जाता है. This is also wrong. Second order जाएगा तो double differentiation आएगा ही आएगा, and therefore the method will be power. चलो, I'll tell you about one more question. I'll get back to this question. ये करना ही होगा, इस मेथड से करना है, उसको x से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, but I'll see. Fine, no problem. Don't worry. तो मैं आपको बता दूंगा. Y double dash करना, आप ट्राई करना, वरना मैं आऊंगा, अभी इसमें टाइम नहीं लगाना चाह रहा. Y of 0 equal to -3 and y dash of 0 equal to 0. थोड़ा लंबा जाएगा, इसलिए I want to avoid it. यहाँ पे भी लंबा ही होने वाला, but we know where we have to go. So this is y double dash plus 3y. So if you see, this could be like auxiliary equation could be d square plus 1 equal to 0. That means d is going to be plus and minus I. So your homogeneous part will be like some constant a. This is alpha plus and minus j beta, I beta. So complex conjugate roots. So the homogeneous part is going to be a cos beta. Beta is 1. So a cos x plus b sin x. Fine. This is your homogeneous part. Now look into the, what is this? 18x square. 18x square is your, did I write 1 here? This is 3, sorry. This is 3. 3 plus and minus root 3 x root 3y. Okay? Root 3x only. This is your homogeneous part. Now let's look into the r of x. R of x is 18x square. So this is a second order function. If it is second order, the yp which you should assume is 18x square है तो x square. So c a और b लिया वहाँ पे तो c1 ले सकते हैं. c1x square plus c2x plus some c3. Fine. Now y dash p of x, y dash सिर्फ लिख रहा हूँ, y dash p लिख रहा हूँ मैं, will actually become 2c1x plus c2, and y double dash will simply become 2c1. Fine. Now let us go back to the equation. जो equation यहाँ आपने लिखा है, और यहाँ पे particular solution के लिए हम ये condition डालेंगे so that we can find those coefficients. So y double dash plus 3y. Y double dash is 2c1 plus
3y है ना, y डबल डैश इज टू c1 फाइन एंड दिस इज 3 टाइम्स ऑफ, यहीं से लिख देगा 3 टाइम्स ऑफ c1 x स्क्वायर प्लस c2 x प्लस c3 इक्वल टू 18 x स्क्वायर। चलो ये यहाँ पे मैंने सब कुछ लिख दिया। व्हाट इज दिस? दिस इज y डबल डैश प्लस दिस इज y इक्वल टू जो लेफ्ट साइड में था 18 x स्क्वायर। नाउ वी हैव टू डू जस्ट द कंपैरिजन ऑफ द कोएफिशिएंट्स। सो इफ यू कंपेयर कोएफिशिएंट्स को आपने कंपेयर करना है। सो 3c1 x स्क्वायर इक्वल टू 18 x स्क्वायर। उसके बाद x के लिए हमारे पास सिर्फ 3c2 x है इक्वल टू 0x, 0 लिख दे रहा हूँ। कांस्टेंट के लिए भी 2c1 प्लस c3 है इक्वल टू 0। ठीक है, इधर देख लो आप 0x प्लस 0 ऐसा करके मैंने लिखा है और अलग अलग कोएफिशिएंट्स को अलग जगह डाल दिया है। दैट्स इट। सो c1 3c1 is x square 18, so c1 becomes 18 by 3 which is 6. c2x, so c2 का कुछ लेना देना नहीं है, c2 will become independently 0. 2c1, so 12 plus c3 equal to 0, therefore c3 becomes minus 12. ये क्विकली हो जाएगा इसलिए मैं आपको यहाँ बताता हूँ। दैट मीन्स c1 c2 c3 सब कुछ मिल गए। आपका इक्वेशन c1 x स्क्वायर ये रहा, c1 x स्क्वायर प्लस c2 x प्लस c3। So let us come back to this. yp c1 x square, so 6x square plus c2x, so 0x plus c3 only c3, so that was minus 12. तो ये हो गया minus 12। यानी कि इस केस के हिसाब से it should be pi 2, हाँ 2 ही है ना, हाँ 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 3c3 है ये तो 2c1, ओके थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पर, 3c1 है ये देखो कांस्टेंट पार्ट 3c3 3 c3 becomes minus 4। ठीक है, वो 3 छूट गया था, so this should be minus 4। now this is fine, so this is cx square 6x square minus 4. this is your particular solution. Now your equation will look like the complete solution, which is y homogeneous plus y particular a cos root 3x plus b sin root 3x, और ये जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन था उसके हमने कोएफिशिएंट निकाल लिए हैं which is 6x square minus 4. so it should look like this. अब अगर इसके बाद भी कोई कंडीशन दी है क्या, लेट मी जस्ट चेक। हाँ कंडीशन दे रखी है y of 0 is minus 3, y dash of 0 is 0. so let's differentiate this quickly. if y dash, so okay y of 0, so y of 0 will be like a just 1, cos root 3x will become root 3x will become 1, b sin root 3x x will become 0, 6x square will become 0, minus 4 is how much, minus 3, so a becomes 4 minus 3 which is 1, so a becomes 1. y differentiation, y dash of x क्या हो जाएगा वो बता दो, minus root 3a sin root 3x root 3b cos cos root 3x, 6x square will become 12x. so y dash of 0, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, सिर्फ root 3b बचेगा and that is equal to 0 only. y double dash 0 y dash 0 दे रखा, that means b should also be 0. so now we have found the value of a and b also. your final solution as per the initial value condition, यानी कि पहले के कंडीशन दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली it should be cos of root 3x, b sin root 3x में b खत्म, 6x square minus 4. this should be your complete solution. so considering your initial condition, वो modification वाला केस है, वो उसमें कुछ exception cases डालने पड़ते हैं, वो मैं आपको बताऊं। if this is fine, so this is how this is like another method of doing it. the limitation of this method, which method, the one which you are doing here, ऐसा नहीं है कि मतलब और भी चीज like ये जो finding final particular integral था, यहाँ पर हमने सिर्फ कुछ एक्सेप्शनल केसेस के बारे में बात करी, जैसे कि e to the power of ax sin and cos
x to the power of n, and then e to the power of ax times of all these functions. If you get any other functions on the right side, then you will have to follow one of these methods which we just saw today, like another two methods. एक तो variation of parameter देखा, एक undetermined coefficient देखा. So undetermined coefficient थोड़ा सा लंबा पड़ता है क्योंकि आपको वहाँ पे y डबल डैश y डैश निकाल के उसके सारे कोएफिशिएंट्स निकालने पड़ते हैं. दैट इज व्हाई थोड़ा सा टाइम लगता है. और उसमें एक्सेप्शन अगर आ गया तो उसमें भी आपको ध्यान रखना पड़ता है कि x से मल्टीप्लाई करना पड़ता है आपको वो टर्म्स, या फिर x स्क्वायर इफ इट इज हैविंग फर्दर रूट्स लाइक दैट. आई होप दिस इज क्लियर. अगर आप चाहें तो एक क्वेश्चन था जो मैं आपसे चाह रहा था कि आप बनाओ, वो ये वाला है. सो दीज आर 3 मेथड्स फॉर योर सेकंड ऑर्डर. I want you to solve this question. इस क्वेश्चन को बनाइए, आपके लिए है. Please try solving this question for the this could be the last question for you. I want the answer from your side. n of x को देखकर ऐसा कुछ डरना नहीं है, जैसे कि y as a function of f of x होता है वैसे ही n of x लिखा हुआ है. ठीक है, n of 0, n of infinity सब दिए हुई चीजें. So let's see this. Let's see if we can do something about this. First of all, your differential equation is d square minus 1 by L square equal to 0. ठीक है, this is just n of x, no differentiation. So you can say d square should be 1 by L square, or you can say d should be plus or minus 1 by L. That means your particular solution, जो कि यहाँ पे homogeneous ही है तो यही होना चाहिए, c1 e to the power of 1 by alpha x plus c2 e to the power of minus 1 by alpha x. These are the two cases which we get. और आप देख सकते हैं expressions भी ऐसे ही. One thing which is given is n of 0 is k and n of infinity is 0. Now think of it, ki if you get n of infinity, you see that your expressions will look like this. C1 e to the power of infinity plus C2 e to the power of minus infinity, like that. L is there, so L is just a constant. Now, if I'm saying this value has to be 0, there's only one chance for this. This e to the power of minus infinity will become 0, so this is 0, no problem with this. But this e to the power of infinity will trouble you unless your coefficient itself becomes 0. If your coefficient becomes 0, you will not have any term as e to the power of x by L, like positive wala exponential term. And then only you can have a finite value if your n tends to infinity. Fine. I'll just repeat once again. If we take the case of x tends to infinity, e to the power of minus infinity is a finite value, e to the power of infinity is infinite value. So the only case where your sum will be 0 is when your coefficient of the first term is 0. Like that term will not exist itself. This term should not exist here. And that is possible only when your C1 becomes 0. That means that your case looks like this. Y equal to just C2 e to the power of minus x by L, of which there is a case of n to the power of 0. So y should become C2, which is k. So ultimately your final solution should be like this. Y equal to k e to the power of x minus x by L. Minus x by L, which is this one. I hope it is clear. क्योंकि finite value चाहिए तो infinite वाला expression होना ही नहीं चाहिए वहां पर. Or it is only possible if the coefficient which was C1
is 0. So that term has no existence in our case. Then only it is possible. And if that is 0, D is the correct answer. Right? D is the correct answer. Now there is a case of n of 0. So that means your C2, the constant part, will become that constant, that is K, and that's a tap. So I hope this is clear. I'll get back to that question. Let me just check. Okay? Because such questions are like sometimes agar expressions आसान हो on the right side, and if you're not getting it by the other methods, this method will help you. ये बस method, ये जो method बताया मैंने undetermined coefficient, it's generally long, but it will help you in some other cases. Fine. So let us keep it till here. आज के लिए बस इतना ही. अब मिलेंगे मंडे को, और यूपी में इलेक्शन है या नहीं वो कल मुझे मंडे को बताना. ठीक है गाइस? ओके, बाय बाय, टेक केयर. है ना? मैंने भी तो बोला था है, लेकिन कब है आपने बताया नहीं. आप यूपी में रहते हो, आपको वोट देना होगा ना. अभी अच्छा पता करो, वोट दो. नहीं देना? 18 के नहीं हुए हो क्या बेटा? फर्स्ट ईयर में ही हो क्या? चलो, नो प्रॉब्लम. ओके गाइस, एवरीबॉडी हैव अ हैप्पी संडे. छुट्टी मनाओ, कल पढ़ाई भी करना थोड़ा.